Now, look at the yellow color flower on the extreme left of our slide, and you will find that this flower can be cut into equal halves by any plane passing through the center. So that is why this flower is called as a radial symmetrical flower or an actinomorphic flower. Examples of actinomorphic flowers are datura, chili, and mustard. Okay, but if the flower can be cut into two equal halves by only one plane, okay, then that is called as a zygomorphic flower. Such a symmetry is called as bilateral symmetry. Example would be pea, beans, cassia, and gulmohar. Asymmetrical flowers वो है जिसको कोई भी axis में आप कट करिए, you will never get two equal halves. Example of that would be canna. What are the types of the flowers? Based upon the position of the ovary, based upon the position of the calyx, corolla, androecium with respect to the ovary on the thalamus. Okay, see this. Look at this particular diagram on the left. What you find is that the thalamus is concave, okay, like this, and the ovary I'm sorry, the thalamus here we are talking about on the right. The thalamus is concave and the wall of the ovary is fused with the wall of the thalamus. And the rest of the floral whorls, they come above the ovary. So now the ovaries become inferior क्योंकि बाकी सारे whorls उसके ऊपर हैं. Such a flower is called epigynous flower. Inferior ovary को हम दिखाएंगे G, उसके ऊपर dash. तो यहाँ पे ovary is inferior, all of them are superior. So सब ovary के ऊपर है. So that is why it is called epigynous flower. And epigynous flowers are seen in guava, cucumber, sunflower, the ray florets and the disc florets of sunflower. Then we have got perigynous flowers. Okay. In the case of perigynous flowers, the ovary and the other whorls, if you see the other whorls at the rim, not at the top. देखिए बच्चों, ये ये है थैलामस जैसा कॉनकेव है और ओवरी अंदर है और बाकी सारे वॉल से ऊपर है. तो ये हो गया इंफीरियर ओवरी. अब ये देखिए थैलामस, ये ओवरी है और बाकी सारे वॉल्स उसके साइड में, तो उसको हम कहेंगे पेरिगाइनस फ्लावर. ओके, सो ये जो मेरे फिंगर्स है वो रिम, तो सारे वॉल्स के रिम पे और ओवरी भी वहीं पे सेंटर में, तो हम कहेंगे इट्स अ पेरिगाइनस फ्लावर जहां पे ओवरी इज हाफ इंफीरियर ओवरी. एग्जांपल वुड बी plum, peach, and rose. Okay, but if the thalamus is convex and you have the ovary at the top, okay, if the thalamus is convex and we have the ovary at the top, so it's a superior ovary और सारा पूरा फ्लावर उसके नीचे है, तो उसको हम कहेंगे फ्लावर क्या हो गया, हाइपोगाइनस हो गया. उसकी ओवरी कैसी है, सुपीरियर है. मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल आर देयर एग्जांपल्स. ओके, सो एमसीक्यूज में ध्यान में रखने का है कि दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ द ओवरी विद रिस्पेक्ट टू द अदर वर्ल्स. ओके, एंड ये एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज. तो जैसे हमने डिफाइन किया फ्लावर, कि a flower is defined as a modified shoot which is meant for sexual reproduction, and the outermost whorl of a flower is called calyx, followed by corolla, androecium, and gynoecium. So calyx is the outermost whorl. Individual members are called as sepals. It is green in color, it is leaf-like, and it protects the flower in the bud stage. Okay, अब अगर ये कैलिक्स के मेंबर्स ऐसे फ्यूज्ड है नीचे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं गैमोसेपैलस. अगर ये सेपल्स फ्री है तो उसको हम कहते हैं
polysepalous. So free sepals, polysepalous, united sepals, gamosepalous. Okay. Then the corolla में भी वैसा हो सकता है, आइदर द पेटल्स आर यूनाइटेड और द पेटल्स आर फ्री। अगर यूनाइटेड है तो हम उसको कहेंगे गैमोपेटलस, अगर फ्री है तो उसको हम कहेंगे पॉलीपेटालस। सो हमने देखा कि गैमो वाला जो कंडीशन है, इट इज अ फ्यूजन विदिन द whorl. It's a fusion within the whorl. It was either a fusion between the sepals or it was a fusion between the petals. तो चार सेपल्स हैं, उनका आपस में फ्यूजन, या चार पेटल्स हैं जिसका आपस में फ्यूजन है। सेपल पेटल फ्यूज नहीं हो रहे, सेपल सेपल फ्यूज हो रहे, पेटल पेटल फ्यूज हो रहे। तो जब ऐसा होता है, when there is a fusion within the whorl, then such a fusion is called as cohesion in botany. What do you call it? Cohesion. ठीक है। लेकिन अगर दो अलग अलग वर्ल्स के बीच में फ्यूजन होता, जैसे पेटल्स एंड्रोशियम के साथ फ्यूज हो रहे, तो हम उसको अधेशन कहते हैं, अधेशन। ओके। नाउ द कोरोला which is made up of petals varies, अलग अलग टाइप्स होते हैं। The beautiful colors variety that you see in nature is because of this petals. फ्लावर्स के ब्यूटीफुल टाइप्स देखते हो, वैरायटीज देखते हो, कलर्स देखते हो, ये कलरफुल नेचर कौन देता है? पेटल्स देता है। The shape can also be variable, like it can be tubular, bell shape, funnel shape, or it can be wheel shaped. Now, what we observe is that the sepals or the petals are arranged in a specific manner when the flower is in a bud condition. The sepals or petals are arranged in a specific manner when the flower is in a bud condition, and this arrangement is called as estivation. तो देखिए फर्स्ट टाइप, जहां पे sepals, समझो, we'll start sepals or petals. So we'll talk about petals. They're coming very close. Okay, they can touch each other, but they will never overlap. Such an estivation is called valvate. In the second type, one petal, yes, sepal, it overlaps the other, and on one margin it is being overlapped. तो एक मार्जिन पे वो ओवरलैपिंग है, दूसरे मार्जिन पे वो ओवरलैप्ड है। एक मार्जिन पे उसके ऊपर कोई है, दूसरे मार्जिन में वो किसी के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। एग्जाम्पल वुड बी चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। Now look at this. What we observe over here is there is one sepal or petal which has been overlapped. So let us call it as the inner one. Whereas if there is one who is overlapping on both the sides. So it is the outer one. Rest you have overlapping and overlap. So ये कोई particular direction में नहीं हो रहा. So such a estivation is called imbricate estivation, which is seen in the flowers of cassia and gulmohar. Do you recollect cassia किसके example में आया था इसके पहले? The fourth one is the vexillary estivation, which is also called papilionoecious because it is seen in papilionoece, like pea, bean family. इसलिए इसको बोलते हैं papilionoecious condition. जहां पे you will see that there is a largest petal called standard or vexillum, which is posterior, which overlaps two on the sides, which are called as wings or alae laterally. And there are two which are fused called keel or carina, which are the smallest ones. Okay, so posterior most one is the largest, it is called standard or vexillum. Side के दो जो है lateral are called wings or alae, and the two which are fused are called keel or carina, which is the smallest. तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वाला तो एक ही है, दूसरे वाले में फ्यूजन कोहेजन नहीं है, थर्ड वाले में
कोहेजन है, सो हम उसको ऐसा ब्रैकेट में लिखते हैं, कोहेजन इज शोन बाय ब्रैकेट, ओके, एंड इट इज सीन इन द पैपुलिनेशिए फैमिली। इसमें पी, बीन्स वगैरह एग्जाम्पल्स में आएंगे। तो ये था एक फ्लावर के एक्सेसरी वर्ल्स के बारे में, जिसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल वर्ल्स।